बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। यहाँ थ्योरम 2.1 हमें नज़र आ रहा है। दिस इज़ 2.1। इसी थ्योरम को हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है, लेकिन इसको हम आज दोबारा डिस्कस करेंगे और उससे आगे कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल भी करेंगे। तो लेट्स सी for 3 integers a, b, c. Here the integer a will always divide 0. The integer 1 will always divide another integer a. Similarly, the integer minus 1 will always divide any integer. The integer a will always divide itself. If the integer a divides b and if b divides a, that is, if the two integers divide each other, then one of the integers will be equal to plus minus the other integer. If the integer a divides integer b and if b divides c, then a will divide c. This is the transitive property. If a divides b, then a will divide product of two integers b and c. If a divides b, then the product ac will divide the product bc, where c is not equal to 0. If a divides b and a divides c, then a divides bx plus cy, where xy belongs to z. That is, if the integer a divides the two integers b and c, then a will divide the linear combination of b and c. In general, if a divides the integers b1, b2 up to bm, then a will divide the linear combination of b1, b2 up to bm. This is the linear combination of b1, b2 up to bm. Also, if a divides the sum of two integers and if the integer a divides one of them, that is b1, then a divides the second integer b. इसको हम मुख्तसरन पढ़ते हैं, उसके बाद उसी थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। डिविजिबिलिटी क्या है, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी, इफ ए बी आर टू इंटीजर्स with a not equal to 0, we say that a divides b and we write a divides b. If there exists some integer c such that b is equal to ac, a divides b. This a will divide b and we will write it as a divides b if there exists another integer c such that if this b is equal to b is equal to ac. This b is equal to ac means this a will divide b. Here this a is called the factor divisor of b, so is c1 also. This a is divisor of b. Similarly, this c is also called divisor of b. b is called the multiple of a and c. This b is multiple of a and c. For example, 16 divides 32 because we can write 32 is equal to 16 into 2. This is b, this is a, this is c. This one divides a for any a belong to z. That is, we have a is equal to 1 into a. This is a true equation, and from this equation we can say that this 1 divides this a. Similarly, 5 divides 2 because we can write 10 is equal to 5 into 2. This 10 is the b, this is our b, this 5 is our a, this 2 is our c. From this equation we can say that this 5 divides this 10. This is we see here. Now 4 divides 10. Can we write 10 as a product of 4 with some integer? This 10 is equal to 4 times some integer is impossible because we don't have any x which when multiplied with 4 can give us 10. So this 4 divided 10 is not possible, and we say 4 does not divide b. Here this x belongs to z. For this equation we don't have x, so 4 divides 10 is not possible, and we can say 4 does not divide 10. If a does not divide b, we write a does not divide b. This is the first part of the theorem. Every integer divides the integer 0. Since we know that 0 is
always equal to a into 0 for all a belong to z. From this equation we can say that this a divides this 0, written as this one. This a divides 0, for this a divides 0 we can write this equation, and from this equation, this is b, this is a, this is c. From this equation we can say that this a divides this b. So a divides 0. We have 1 divides a, similarly minus 1 divides a. These are two results. The integer 1 will always divide any other integer. Similarly, the integer minus 1 always divide another integer. From this, for this we can write a is equal to 1 into a. This is a true equation. From this equation we can say that this one divides this a, written as in this form. Now here we can write a is equal to minus 1 into minus a. From this equation we can write this minus 1 divides this a, and we write it as minus 1 divides a. This represents minus 1 divides a. Now this is the third part. A always divides a. This is an integer always divides itself. For this we know that a is equal to a into 1, and for all a belong to z, and from this equation we can write this a divides this a, and we see it here. Now this is the fourth part. If a divides b and b divides a, then a will be equal to plus minus b. A divides b. If a divides b, then there will exist integer c1 such that b is equal to a c1. This b will be written here. This a will be written as a product. Now we know b divides a. B divides a. B divides a, there will be c2 such that a is equal to b c2. Now here we have two equations. This is equation 1. This is equation 2. Now putting the value of b taken from here, put 1 and 2. So इसी b की वैल्यू हम यहाँ से पिक करेंगे. This a will be equal to a c1. This is value of b and c2. Now we can write a into c1 c2. This is an equation which is equal to a is equal to a c1 c2. Simplifying we get a minus a c1 c2 is equal to 0. Now taking common, a into 1 minus c1 c2 is equal to 0. Here we see the product of two integers. So either the first integer is 0 or the second one is 0. Here we have a result a divides b. This a divides b means this a will never be 0. So here we have written a divides b. It means this a will divide b, but this divisor will never be 0. So here in the product we see a. This a is not equal to 0 according to this statement. Hence this expression will be equal to 0. Here we have 0 or this integer will be 0. Since this a is non-zero, which is shown here, hence this second one will be 0. 1 minus c1 c2 will be 0. Simplifying we get c1 c2 equal to 1. Now here we have two integers c1 c2 whose product is equal to 1. So it is possible either c1 c2 both will be plus 1 or c1 c2 both will be negative 1. Hence we can write that on account of this product equal to 1, it is possible that c1 and c2 both will be equal to either plus 1 or minus 1. c1 c2 are integers. So here we have value of c1 c2 which are plus minus 1. So putting the value of c2 plus minus 1 from here, and we will put it here. So this is c2, putting for c2 from 2. This is equation 2. A is equal to b c2. So c2 की जगह अगर हम plus minus put करें, so this is the result, and here we have taken plus minus for c2. This c2 is plus minus 1, so this is the result. In this result we see that whenever two integers divides each other, then one of the two integers will be equal to plus minus the other integer. A result, if a divides b and b divides c,
then a divides c. This is the transitive property. अगर एक इंटीजर किसी दूसरे को इंटीजर को डिवाइड करे और दूसरा वाला इंटीजर किसी तीसरे इंटीजर को डिवाइड करे तो फर्स्ट इंटीजर तीसरे इंटीजर को डिवाइड करेगा. दिस इज दी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे है a डिवाइड्स b, तो इसी रिजल्ट से हम कह सकते हैं देयर विल एग्जिस्ट इंटीजर c1 such that b will be equal to a c1. Similarly, b divides c means there will exist c2 integer such that c will be equal to b c2. Now put 1 and 2. This is 1, this is 2, so we will put value of b from here and we will put here. So this c is equal to b c2. b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है. अब यहाँ पे एक इक्वेशन है दिस c is equal to a times c1 c2, which means a will divide c, and here c1 c2 are two integers. c1 c2 are integers, hence their product will also be integer. So this is the proof of the transitive property. Now here we have if a divides b, then a will divide the product of b and c, that is a will divide bc. As a divides b, so there will exist integer k such that b is equal to ak. Multiplying this equation by c, here we have bc, hence multiplying this equation by c, so we will get bc equal to ak into c. Now rearranging, we will get a times kc. Now this is an equation bc is equal to a times kc. K is integer, c is integer, kc is also integer. From this equation we can say that this a divides this bc. So this is the proof of the result. Now here we have another result. If the integer a divides b, then the product of two integers will also the product of b and c. That is, if a divides b, then if we multiply the divisor and divide the multiple by the same integer, then one product will divide the other product. अगर हम किसी भी डिवीजन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या डिवाइजर और मल्टीपल को एक ही इंटीजर से ज़रब दे दे तो उसका प्रोडक्ट, तो वन प्रोडक्ट विल डिवाइड द अदर प्रोडक्ट. अब यहाँ पे क्या है, एज ए डिवाइड्स बी, दिस इज गिवन, सो देयर विल एग्जिस्ट इंटीजर के such that this b will be equal to ak. Now this is an equality on account of this result. Now multiplying both sides by c, multiply by c where c is an integer, we get bc equal to ak into c. Rearranging, that is by using the one of the properties, so we will get a into kc, and this equal to this is kc, which can be written as ck. This is commutative property. Now by associative property we can write ac into k. तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करें. यहाँ जब हम दोनों साइड को c से ज़रब देंगे तो विदाउट एनी मेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी वी विल राइट with one or two step as ac into k. So here we have an equation, and from this equation we can say that this ac will divide this bc, and this is the result, ac divides bc where c is not equal to 0. तो जब कभी एक इंटीजर किसी दूसरे को डिवाइड कर रहा हो तो दोनों को अगर हम किसी इंटीजर से ज़रब दें तो वन प्रोडक्ट विल डिवाइड द अदर प्रोडक्ट. अब यहाँ पे एक रिजल्ट भी है इससे मुताल्लिक़, 3 डिवाइड्स 27, दिस इज़ ट्रू. तो अब अगर दोनों को हम किसी इंटीजर से ज़रब दें, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 6 आ गया, इन दोनों से 54 आ गया, so it is obvious that 6 divides 54. Here 3 divides 27, multiplying both integers by 2, and here we get 6 which divides 54. So अगर एक इंटीजर किसी दूसरे को डिवाइड कर रहा हो तो दोनों इंटीजर्स को जब हम किसी इंटीजर से ज़रब देंगे तो फर्स्ट प्रोडक्ट विल डिवाइड द सेकंड प्रोडक्ट. A divides B and A divides C, then A divides the linear combination of B and C. This is the linear combination. Since A divides B
there will exist integer c1 such that b is equal to a c1 also as this is a divided c. So on account of a divided c, we will have integer c2 such that c is equal to a c2. Now if x, y are two integers, then from 1 and 2, multiplying this equation by x, similarly multiplying this equation by y, now bx plus cy, this is here, this is the multiple here, so taking the multiple and putting the value for b, this b is equal to ac1, so this is the value, this c is equal to ac2, so this is the value, या इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले, जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो बी एक्स प्लस सी हो जाता है और इस तरह इन दोनों को हम ऐड करते हैं। अब यहाँ से ए कॉमन निकाल ले, दिस इज इक्वेशन and from this equation we can say that this a will divide this sum, this linear combination. So a divides the linear combination of b and c, where this c1x plus c2y r is integer, this is integer. If a divides b and c, then a divides the combination of b and c. If a divides two integers, then we can find so many other इंटीजर्स। यहाँ पे सिग्मा हमने लगाना चाहिए था। यहाँ अगर हम सिग्मा लगाए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर ए बी आई पर ऑल आई डिवाइड कर रहा हो तो ए विल डिवाइड सिग्मा बी आई एक्स आई। सिग्मा बी आई एक्स आई का मतलब होगा वेयर आई इज इक्वल 1 अप टू m। सिग्मा बी आई एक्स आई वेयर आई इज इक्वल 1 अप टू m का मतलब ये होगा ए डिवाइड b1x1 plus b2x2 up to bmxm. Here if a divides this sum and if a divides b1, then a divides b2. As a divides this sum, so there will exist integer c1 such that this b1 plus b2 will be equal to a c1. Also a divides b1, this is given, this is a divides b1, this is given. So there will exist integer c2 such that b1 will be equal to a c2. Now here we have two results. This is result 1, this is one result, and here this is another result. अब क्या करना है, by 1 minus 2 हमने क्या करना है, इसी रिजल्ट से इसी रिजल्ट को माइनस करना है। वी है तो दिस इज b1 प्लस b2 और इसी को यहाँ पे माइनस करना है। b1 प्लस b2 की वैल्यू यही है और b1 की वैल्यू यही है, तो इस वैल्यू को भी माइनस, जिस तरह b1 हम माइनस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी हम माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस करते हैं, इसको हम क्रॉस करते हैं तो b2 आ गया और यहाँ से हम a कॉमन निकालते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दिस a डिवाइड्स b2, a divides b2 where c1 c2 are integers, hence their difference will also be integer. अब यहाँ पे क्या है, if a divides this sum and a divides b1 then a divides b2, तो ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में हमने प्रूव किया, इसको हमने प्रूव किया, इसमें कुछ ख़ास तो नहीं है, लेकिन चलो इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पे है a divides this sum, so from this we can write this equation for sum k1 belong to z, here a divides b1, so from this we can write this equation for some integer k2। अब क्या करना है, इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा है और इसी b2 को हमने यहाँ पे, इसी b1 को हमने ट्रांसपोज किया है। अब b1 की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ से हम a कॉमन निकालते हैं, सो b2 इज इक्वल दिस वन, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन a डिवाइड्स, और इसको अगर हम these two are integers, k1 k2 are integers, their difference is integer, hence replace this by integer k। अब क्या है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन a डिवाइड्स b2, और यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल है कि अगर 2 डिवाइड्स 4 प्लस 6, ये ऑब्वियस है, 4 प्लस 6 का मतलब 10, 2 डिवाइड्स 10 एंड 2 डिवाइड्स 4 देन 2 डिवाइड्स 6, ये तो क्लियर है। इस तरह 3 डिवाइड्स दिस सम, 9 जो बचे 15 है, 3 डिवाइड्स 15 एंड 3 डिवाइड्स 9, हेंस 3 डिवाइड्स 6। यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइड्स 6, 6 का मतलब 2 प्लस 4, 2 डिवाइड्स 2, इट इज़ ऑब्वियस,
तो 2 को डिवाइड कर लिहाजा 2 4 को डिवाइड करेगा इसी रिजल्ट के मुताबिक। तो ये भी दुरुस्त है। 2 डिवाइड 16 और 16 बराबर है 12 प्लस 4। 2 डिवाइड 12, दिस इज ट्रू, हैंस 2 डिवाइड द पार्ट ऑफ 12 विच इज 4। अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा हो और 2 12 को भी डिवाइड कर तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। इस तरह यहाँ पे 2 4 को डिवाइड करता है, 4 हम इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या है, 2 8 को भी डिवाइड करता है और 2 -4 को भी डिवाइड करता है। जो रिजल्ट अभी हमने पढ़ा ये वाला, इस रिजल्ट को हमने थ्योरम में प्रूव किया, यहाँ पे हमने इसको रिपीट किया। अब इसको हम एक और तरीके से ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या है, a डिवाइड्स b and a divides c, then a divides this linear combination for all xy belong to z। अब यहाँ पे क्या है, a divides b1 plus b2। हमारे पास जो थ्योरम है यहाँ पे a divides this sum and a divides this individual b1 then a divides b2, तो इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a divides this sum and a divides b1। तो हम क्या कर लेंगे, इसी a के लिए हम यहाँ पे इसी इंटीजर का और इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। तो b1 प्लस b2 को हमने यहाँ पे b से ज़ाहिर किया है और b1 को हमने c से ज़ाहिर किया है। अब ये b क्या है, दिस b इज एक्चुअली b1 प्लस b2, तो यहाँ पे रखा गया है। ये c क्या है, दिस c इज एक्चुअली b1, तो b1 यहाँ पे रखा गया है। x और y इंटीजर है। अब x और y हम कौन से इंटीजर ले ले यहाँ पे पुट करें कि हमें थ्योरम का रिजल्ट प्रूव हो जाए। अगर a b1 प्लस b2 को डिवाइड कर रहा हो और a b1 को डिवाइड कर रहा हो तो हमने साबित करना था कि a b2 को भी डिवाइड करेगा। तो इसी रिजल्ट को साबित करने के लिए हमने यहाँ पे जो दो इंटीजर है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। अब यहाँ पे जो एक्स वाई इंटीजर है इसको हमने इन पार्टिकुलर x इक्वल 1 और y इक्वल -1 इसी लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट किया, b की वैल्यू पुट किया, c की वैल्यू पुट किया, एक्स वाई की वैल्यू इन पार्टिकुलर पुट किया। जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास b2 आ गया। तो ये क्या था, यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरम है यहाँ पे अगर हम देख ले तो a डिवाइड कर रहा था b1 प्लस b2 को और a डिवाइड कर रहा था b1 को। तो हमने साबित करना था कि ये a b2 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने साबित किया कि a b2 को डिवाइड करता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने इन दोनों का b1 प्लस b2 का और b1 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, x और y की इन पार्टिकुलर वैल्यूज पुट किए और b और c की वैल्यू पुट के सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट हमें मिला। अब यहाँ पे क्या है, जनरलाइजेशन है कि अगर a b i को डिवाइड कर रहा हो जबकि i का मतलब है 1 up to n, यानी a डिवाइड b1, a डिवाइड b2, a डिवाइड bn, then there is this integer x1 x2 up to xn such that a will divide b1 x1 plus b2 x2 up to bn xn। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये जो रिजल्ट है इसका जनरलाइजेशन है। यहाँ पे जो रिजल्ट हमने यूज़ किया, यहाँ पे प्रूफ के लिए हमने इसी रिजल्ट को प्रूव किया और इसी रिजल्ट का ये वाला जनरलाइजेशन है। तो इसी रिजल्ट को हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, लेकिन इसको मैं रीड करता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर a b को डिवाइड कर रहा हो और a c को भी डिवाइड कर रहा हो तो a b और c के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड कर रहा होगा और इस लीनियर कॉम्बिनेशन में 2 इंटीजर्स x और y है। तो अगर a b1 b2 अप टू bn को डिवाइड कर रहा हो तो फिर यही a b1 b2 अप टू bn के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा।